हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ लाइट, बट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल यू कैन डू चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर इन द गिवन लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड कुछ ऐसे ही मजेदार चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए आप आई बटन में दिए गए लिंक को भी क्लिक करके पुराने वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। To stay connected with my channel, click the subscribe button and hit the bell icon for regular updates of my videos. Now, without further delay, let's get started. In the previous videos, we have discussed this topic, ray and beam of light. And उसके साथ साथ हमने reflection of light के भी concepts को clear किया था. And in today's video, we'll discuss about the definition of reflection of light, there's some terminology of reflection of light, the laws of them, and the types. So firstly, let's define beam of light. हमने ये डिस्कस किया था कि बीम ऑफ लाइट ग्रुप ऑफ लाइट रेज होते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। लेट्स डिफाइन इट। सो सबसे पहले आज के टॉपिक बीम ऑफ लाइट को डिफाइन किया, जिसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट एंड देयर डेफिनेशन। जो सबसे पहला टाइप होगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको हम डिफाइन करेंगे। द बीम ऑफ लाइट दैट पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकेंड टाइप जो था हमारा वो था कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जो हमारा थर्ड टाइप है ऑफ बीम ऑफ लाइट दैट इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ हमने इन थ्री टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट को अच्छे से डिफाइन कर लिया है। नाउ यू कैन नोट डाउन ऑल द गिवन डेफिनेशन ऑफ दिस थ्री टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स के लिए मेरे पिछले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ने इन डेफिनेशन को नोट डाउन कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द अनदर टॉपिक व्हिच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, एंड दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से समझने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। So let's define it. As you can see in this given diagram, there are some points or terminologies which is present in the process of reflection of light. So let's define all this terminology to make the concepts more clear. First terminology which we will discuss, that is incident ray. We can define this in a way like a light ray that strikes a surface is called incident ray. The second terminology is normal. Normal. The perpendicular of the surface of the striking surface is known as normal. So normal क्या होगा? Perpendicular बनाएगा उस striking surface के साथ में। Third point will be reflected ray. The light ray that returns back in the same medium after striking a surface
a surface is known as reflected ray. Is known as reflected ray. नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, फोर्थ पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट. The angle made by the incident ray with normal is called angle of incidence. It is generally represented by angle I. And the last point of this process, that is angle of reflection. Angle of reflection. An angle made by the reflected ray with normal is known as angle of reflection. एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंगल R से. So here we have discussed all the terminologies. हमने जो दो लॉज भी पढ़े थे उसको अभी हम लोग रिकॉल करेंगे. Before that, note down all the terminologies of reflection of light. So first of reflection states that the angle of incidence, जो कि है हमारा एंगल I, is always equal to angle of reflection, जो कि है हमारा एंगल R. That is angle I is equals to angle R. And second is the incident ray normal and reflected ray always lie in a same plane. ये दो लॉज हमने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट्स वाइज समझे थे. यहाँ अभी हमने इसको नोट डाउन कर दिया सो दैट माय स्टूडेंट्स कैन मेक अ नोट, अ हैंड रिटन नोट ऑफ देयर ओन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी दो तरीके के होंगे. फर्स्ट टाइप is regular or specular reflection of light. Second type is irregular or diffused reflection of light. दोनों टाइप्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डिफरेंस क्या होगा? लेट्स डिस्कस दिस. सो इन द फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे चार लाइट रेज जो फॉल हो रही हैं, ये चारों के चारों जब रिफ्लेक्ट हो रही हैं इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, तो ये चारों के चारों आपस में पैरेलली ही रिफ्लेक्शन शो कर रही हैं. अगर ये
रे 1, रे 2, रे 3 एंड रे 4। यानी R1, R2, R3 एंड R4 चार रेज हमने लिए। ये चारों रेज पैरेलली क्या हो रही हैं, इस सरफेस पे स्ट्राइक हो रही हैं। एंड इस सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद व्हेन ऑल द फोर रेज आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, तो ये चारों के चारों इस रिफ्लेक्टेड रे में भी क्या कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पे भी R1, R2, R3 एंड R4 ये चारों के चारों एक दूसरे के पैरेलली क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। बट इन डिफ्यूज्ड काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे अगर कोई R1, R2, R3 एंड R4 रेज फॉल करेंगी, R2, R3 एंड R4 रेज फॉल करेंगी, तो R1 इस डायरेक्शन में, जबकि R2 इस डायरेक्शन में, R3 इस डायरेक्शन में एंड R4 इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे जो R1, R2, R3 एंड R4 रेज हैं, जब ये इंसिडेंट हो रही हैं इस सरफेस पे, तो ये चारों के चारों पैरेलल हैं एक दूसरे के। लेकिन जैसे ही ये स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है इन द सेम मीडियम, तो बिकॉज ऑफ दिस सरफेस ये रिफ्लेक्शन कैसे हो, ये जो चारों लाइट रेज के रिफ्लेक्शन है ये डिफ्यूज्ड है, ये आपस में पैरेलल अरेंजमेंट शो नहीं कर रहे हैं। सो सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इस तरीके का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लेन मिरर में, या कोई स्मूथ सरफेस पे, या किसी स्मूथ सरफेस पे, लाइक पॉलिश्ड फर्नीचर, पॉलिश्ड फ्लोरिंग। सारे केसेस में हम इस तरीके के रिफ्लेक्शन यानी कि रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। बट इन इरेगुलर या डिफ्यूज ये हमको कहाँ पे मिल जाएंगे, जितने भी रफ सरफेसेस होंगे उन सारे पे हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो देखने को मिलेगा वो होगा इरेगुलर या डिफ्यूज। क्यों? तो कोई एक R1 लाइट रे इस ग्रुप में स्ट्राइक कर रही है, R2 दूसरे ग्रुप में स्ट्राइक कर रही होगी, R4 किसी और ग्रुप में स्ट्राइक कर रहा होगा। इसके लिए जब ये रिफ्लेक्ट होंगे तो इनके रिफ्लेक्शन जो होंगे वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो आई होप कि आज मेरे सारे स्टूडेंट्स को जो भी हमने डेफिनेशंस आज सीखे हैं, जो भी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस किए, या अभी हमने जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस किया, उस सारे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, सो दैट आप कनेक्ट हो सको चैनल के साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं हुई है तो आप इसके पहले वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं इन द गिवन लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां हमने इन सारे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डील किए थे। सो आज हमने उनके डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज को यहाँ डिस्कस किया है। सो आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को आज की क्लास में मजा आया होगा। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।